All right, so today we'll be moving on to your topic number 6, electric and magnetic fields. हमने previously थोड़ा बहुत electric fields को discuss किया है in your starting topic number 6A, 6B के अंदर capacitance आ गया. Now we'll be moving on towards the topic number 6C, electromagnetic effects. ठीक है जी. Now in this topic we'll be talking about इसमें जो prior knowledge चाहिए वो थोड़ा सा you need to know about the magnetic field rule जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा हुआ है about the different north poles south poles कौन से poles के दरमियान attraction होती है, how do they repel, थोड़ा बहुत vectors resolve करनी आनी चाहिए so you can know and find the components यहाँ पे भी important है. For example, how to find the vertical component, horizontal component, angle के सामने we always have the sine component and all. Then the law of conservation of energy, which is neither created or destroyed, it's only converted from one form to the other. इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज क्या होता है, इनके दरमियान रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल गोज टू द नेगेटिव टर्मिनल. व्हाट इज द सेंटीपिटल फोर्स इक्वेशन, यहाँ पे हम शायद उस सेंटीपिटल फोर्स को इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स भी करेंगे. अब मैंने कहा था कि दीज सेंटीपिटल फोर्स ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम सम अदर फोर्स. कभी कभार ये जो सेंटीपिटल फोर्स होती हैं दे कैन ओरिजिनेट फ्रॉम टेंशन, दे कैन ओरिजिनेट फ्रॉम फ्रिक्शन, दे कैन ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल. यहाँ पे विल सी दैट सेंटीपिटल फोर्स कैन ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स एज वेल. Then what are the electric fields effects on charges that we have already done? How to explain strength of magnetic field, ये हमने अभी पढ़ना है. The effects of electric and magnetic fields of movement of charge particles, अगर वो charge particles enter करते हैं into these fields, how electricity can be generated, how to calculate the amount and direction of induced EMF, and how do these electrical transformers work. Then we have later में आप आगे जाके पढ़ोगे particle accelerators and all of that. तो याद रहे that in your unit number 4 के अंदर you will have your topic number 5, 6 and 7, और unit 5 के अंदर you will have your topic number 8, 9 and 10. तो इस टॉपिक 6 के बाद हमारे पास एक टॉपिक 7 है. जब वो हो जाएगा तो आपका यूनिट 4 का कोर्स खत्म हो जाएगा. देन विल स्टार्ट विद टॉपिक 8, 9, 10 और वो यूनिट 5 का कोर्स खत्म होगा. Starting off with your topic number 6C, part 1, which is your magnetic field. In this, we're going to define the terms magnetic flux density, magnetic flux, flux linkage, और इनको calculate कैसे करते हैं, some important formulas that you have to note down as well. In section 6A.1, we already saw that how an electric field can be represented by the lines that show how a charge will experience a force when placed in the field. And you are probably more familiar with the everyday effects of magnetic fields, such as attracting a fridge with a magnetic souvenir. आपने जितने भी जब हम टूर पे जाते हैं, किसी दूसरे कंट्री जाते हैं, हमें शौक होता है वो फ्रिज के मैग्नेट्स लाने का, वहाँ से कहाँ मैग्नेट्स के अंदर इन्वेंशंस हो चुकी हैं. एंड दे आर ऑल्सो नाउ one of the causes of electromagnetism as well, electricity as well, motion में भी यूज़ हो रही है. मैगलेव ट्रेन्स भी आ चुकी हैं आपके पास एज वेल. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं बहुत. इट्स अ वेरी ब्रॉड फील्ड. When electric field affects charges, a magnetic field affects poles. A place that will cause a magnetic pole to experience a force is called a magnetic field. For example, हर मेटल के पास भी कोई पोल्स हो सकते हैं, हर मैग्नेटिक मटेरियल के पास भी कोई ना कोई पोल्स होते हैं. अब अगर कहीं ना कहीं अगर इस मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर अगर इनके पोल्स ने कोई फोर्स एक्सपीरियंस की है, मतलब कि दीज मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल्स आर राइट नाउ करंटली अ पार्ट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड. When we draw a magnetic field in a diagram as well, the field lines always show the direction which a north pole is pushed. हमेशा lines कहाँ से निकलेंगी? North pole से lines are going to leave and they are all going to arrive at the south pole. For example, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में the lines leave the positive, they arrive at the negative. Magnetic poles always exist in north and south pairs, but we take the field as acting from north to south. And this is the direction of arrows drawn onto magnetic field lines and also called as the magnetic flux. Like electric field patterns, the closer the lines are together, the stronger will be the field. And the term referring to the strength of a magnetic field is also known as the magnetic flux density, जिसको हम किस में measure करते हैं? We measure it in Tesla. Looking at figure B, you can see that the field lines all go in and out of the ends of the bar magnet. This forces them to be closer together at those points as well, which means that the field is a bit stronger there as well.
For example, a paper clip picked by a bar magnet will jump to one of its ends as well. Because paper clip is a magnetic material, it can be jumped from a bar magnet. The quantity of the flux measured in Webers, though any given area indicates the strength of the effect of field over there is कितना strongly attraction है, कितना weak attraction है and all. तो ये magnetic flux density क्या है? You can say कि देखो एक आपके पास एक पेपर है, इस पेपर के ऊपर अभी इस वक्त कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं? दो जा रही हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी जाए मैग्नेट की, तो अब कितनी लाइंस जा रही हैं इस पेपर के थ्रू? फाइव लाइंस जा रही हैं। इसका मतलब है दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स हैज इंक्रीज्ड एंड दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज परपेंडिकुलर टू एरिया। मतलब अगर एरिया इस तरह का है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट? परपेंडिकुलर 90 डिग्री एक्टिंग ऑन द एरिया। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज का मतलब क्या है? दैट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया have basically increased. If the magnetic flux is in a uniform direction and lies perpendicular to area, then sine 90 is equal to 1 and the equation then simplifies to phi is equal to ba. This phi is a sine. ये phi एक ग्रीक लेटर है दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू बी इंटू ए। व्हाट इज बी? बी इज व्हाट? मैग्नेटिक फ्लक्स, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनटू एरिया। फॉर एग्जांपल, if the bar magnet causes a magnetic field with a flux density of 20 millitesla perpendicular to area A, how much flux will be contained if this area is 10 centimeter cube? ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड जो B है वो कितनी थी? 20 मिली टेस्ला, और एरिया आपको कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। कैन वी कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विच इज बी इंटू ए? बी इंटू ए का मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी? 20 मिली टेस्ला, 20 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। और एरिया क्या होता है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या मतलब है? 10 इंटू 10⁻⁴, नॉट -2। सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इट्स गोइंग टू बी 10 इंटू 10⁻⁴, एंड दैट विल गिव यू द magnetic flux density. In figure B, the uniform magnetic field has flux density of 5 into 10⁻⁵ Tesla and it is an angle of 75 degrees to the region of area A. How much flux will be contained by this area if it is 1 centimeter square? एरिया इज व्हाट? एरिया होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता है कि आप पावर्स अंदर मल्टीप्लाई करते हो, इसलिए इट्स नॉट 10⁻⁻², इट इज इंस्टेड, क्योंकि इसके बाहर एक स्क्वायर भी है, तो दैट 2 into -2 बिकम्स -4। अब कभी कभार क्या होता है कि देखो, अब ये आपके पास पेज है, अब पेज ये है, आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है दैट माइट नॉट बी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। तो इंश्योर कैसे करें कि वो परपेंडिकुलर एक्ट करिए? यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट द वर्टिकल और द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो भी उस पेपर के 90 डिग्री पड़ रहा होगा। इन सम केसेस इट कैन बी साइन थीटा एज वेल, डिपेंडिंग ऑन के एंगल के सामने कौन सी साइड है। इन सम केस इट कैन बी कॉस थीटा एज वेल, जैसे हमने वर्क डन में पढ़ा था। वर्क डन कब होता है? वर्क डन तभी होगा अगर डिस्टेंस उस डायरेक्शन में है और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में। अगर फोर्स इस तरह से जा रही है तो हम फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेते हैं? दैट वाज पैरेलल टू डिस्टेंस, इसलिए हम उसको कहते थे एफ कॉस थीटा। यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं कि अगर ये एरिया है तो हमारे पास अगर मैग्नेट फील्ड लाइंस इस तरह से है, हमें कौन सा चाहिए? वर्टिकल वाला कंपोनेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे? बी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एरिया, नॉट बी इनटू एरिया। हर दफा जरूरी नहीं दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर, दे कैन बी डायगोनल एज वेल। तो वहां पे आप बी साइन थीटा को एरिया से मल्टीप्लाई करोगे एंड देन यू कैन गेट योर magnetic flux density as well. In the situation where the flux is perpendicular to the area, a rearrangement of the equation shows why the quantity B is known as magnetic flux density. By sharing the flux over the area, B indicates how close together the magnetic field lines are, how dense they are. How dense field lines are indicating how strong the field is, and we can also call magnetic, इसको magnetic field strength कहते हैं B को। अभी तक क्या क्या क्वांटिटीज पढ़ी? B पढ़ा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है फाई, एरिया क्या है ए, और उसमें आपने देख लिया कि इट्स ऑलवेज स्क्वायर। सिमिलरली वी हैव अ थिंग नोन एज फ्लक्स लिंकेज एज वेल। द इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड्स एंड चार्ज पार्टिकल्स और कंडक्टर्स अलाउ मोटर्स टू ऑपरेट एज वेल। आप आगे जाके अभी डीसी मोटर्स देखोगे, फैराडेज लॉ, लेंजेस लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तरह हम डीसी मोटर्स कैसे ऑपरेट करती हैं एज वेल। उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इन मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन magnetic flux is made to interact with a coil of wire as the effect on a single strand of wire is too small to be useful. If the single wire is coiled up,
then the magnetic field can interact with each turn on the coil, and so any effect is multiplied n number of times, where n is the number of turns on the coil. तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इंक्रीज करने का एक तरीका तो आपको भी पता लग गया. यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉयल एज वेल. कि अगर एक कॉयल है, उस एक कॉयल के ऊपर आपके पास जो वायर के टर्न्स हैं, अगर आप वो इंक्रीज कर दोगे, फॉर एग्जांपल अ सोलेनोइड, you can also increase your flux linkage as well. So the amount of flux interacting with the coil of wire is known as flux linkage, which is the product of what? Number of turns multiplied by the magnetic flux in that region, जिसको हम वेबर में मेजर करते हैं. फ्लक्स लिंकेज किस में मेजर होता है? वेबर में. Remembering that phi is equal to BA means that we can also calculate flux linkage as BAN, क्योंकि flux linkage का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज. और आपको पता है कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कैसे निकालते हैं? B इंटू ए. तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? NBA भी बन सकता है टू कैलकुलेट फ्लक्स linkage. For example, Zoran takes a wire and winds it into a coil of 10 circular turns with a radius of 5 centimeter and then holds this in a magnetic field with a strength of 20 millitesla. रेडियस आपको गिवन है, बी आपको गिवन है, आपने फ्लक्स लिंकेज निकालना है. पहले तो आप एरिया निकालो कॉयल का. कॉयल सर्कल होती है, तो सर्कल का एरिया हम कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर. पाई इंटू 5 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर में स्क्वायर ले लें, तो यू विल फाइंड द एरिया. नाउ कैन वी फाइंड द फ्लक्स लिंकेज? फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू BAN. बी आपके पास क्या है? 20 मिली टेस्ला इंटू एरिया आपके पास आ गया, और एन नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन थे? 10 सर्कुलर टर्न्स इज गिवन, और आपके पास फ्लक्स लिंकेज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा. पोल्स आर व्हाट? जैसे नॉर्थ है, साउथ पोल है, जैसे चार्जेस थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, वी टॉक अबाउट पॉइंट चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. ओवर हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉर्थ पोल और साउथ पोल. देन वी टॉक्ड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड. Magnetic field is a region of a space that will cause a magnetic pole to feel a force. Magnetic flux is an alternative phrase referring to magnetic field lines. Then we have magnetic flux density, that is equal to the ratio of magnetic flux to the area it is passing through. फिर हमारे पास टेस्ला है, the unit of magnetic flux density or magnetic field strength. Then we have Weber, which is the unit of measurement of magnetic flux and linkage. Magnetic field strength क्या है? वही जैसे B, जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल B. Flux linkage इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमने BAN करके निकाली है ना, दैट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो कॉयल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. और वेबर टर्न्स इसका यूनिट है, वेबर भी उसी का यूनिट है, दैट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड एज वेल. इज एवरीथिंग क्लियर टिल हियर? एनी प्रॉब्लम्स? ओके. We're now going to discuss the strength of magnetic field. Imagine that we place two bar magnets at opposite ends of a desk, separated by a relatively large distance. We find that they do not move with respect to each other. They do not seem to repel or attract when the poles are aligned. So we would expect these magnets to attract each other and therefore to move towards one another, but in fact they remain stationary. This is because the magnetic fields of each magnet at this distance are too weak to produce a significant force on the other. So close by this magnet, we have a strong force, which means that the magnets would attract each other if they were close together. However, at this distance, the field is a lot weaker, and therefore the force on this magnet is too small to be attracted to the other magnet. As we bring one of the magnets closer to the other, the magnet experiences an increasing force due to the field of the other magnet. So now that these two magnets are closer together, they experience a larger force towards each other, and therefore they attract. Magnetic field strength increases as we move close to the source of the field. Here we've drawn the magnetic field lines of a bar magnet, and it turns out that as we get closer to the magnet itself, which is the source of the field lines, there is an increase in magnetic field strength. This corresponds to a magnetic pole experiencing a greater force at closer distances to the source. So here we have a big bar magnet in the centre, and for this magnet here, which is separated by quite a large distance from the source, we see that the force
on this magnet, which we're going to call F1, is fairly small. And notice that the force on the south pole is in the opposite direction to the force on the north pole, because the south pole is repelled by this south pole and the north pole is attracted to it. Now let's consider this magnet, which is much closer to the source. This is going to experience a much greater force, which we're going to call F2. And again, notice that the south pole is repelled by the south pole of the source, whereas the north pole is attracted towards the south pole of the source. And we know that F2 is greater than F1. We're now going to talk about how magnetic field lines can indicate magnetic field strength. We can gauge the strength of magnetic field by looking at how closely the magnetic field lines are spaced. So in the two examples below, we have a current carrying wire, and current is in the upwards direction for both wires. Remember that we can use the right hand grip rule to show the direction of the field lines. If we point our thumb in the direction of the current and curl our fingers round, this will show us the direction of the field lines, and you can see that the magnetic field lines are curving in an anti-clockwise direction. And in these two examples, one of the magnetic field lines are very dense, whereas these magnetic field lines are much more sparse. Closely spaced lines indicate a stronger magnetic field, and we can see that closer to the wire we have very dense magnetic field lines, and further away we have much more sparse magnetic field lines. And this means as we move outwards from the wire, we have a decreasing magnetic field strength. If the lines are equally spaced, this signifies that the magnetic field is uniform. So these magnetic field lines are all equally spaced from one another, and this means that this magnetic field is uniform. With this knowledge, we can see that the magnetic field strength of a bar magnet is strongest at the poles. At the poles are where the field lines are most dense, and so the field is strongest. Further away from the poles, we see that the field lines are much more sparse. This can be demonstrated by placing a paperclip near to a bar magnet. A paperclip is made from steel, and although it is not a magnet, it still experiences a magnetic force, because magnets can attract not only other magnets, but some kinds of metal, like certain types of steel. This paperclip is going to move directly to one of the poles on the magnet, and we see that it is moved from its initial position up onto the pole of the magnet. And this is because the field is strongest at the poles, and therefore these regions result in the greatest attractive force on the paperclip. So here's our paperclip. It's experiencing a force towards the middle, F1, a slightly greater force, F2, but the greatest force of all, F3, is towards the pole. The measure of the strength of a magnetic field is known as the magnetic flux density, and we give the symbol B to this, which is why we sometimes refer to a magnetic field as a B field. Looking at our example of a bar magnet again, we look at the magnetic flux density in three different regions. Since we know that the strength of a magnetic field is greatest at the poles, we know that B1 is greater than B2, which must be greater than B3. The commonly used unit for magnetic flux density is the Tesla, or T. And if we measured the magnetic flux density at the pole of a bar magnet, we'd find that it was about 0.01 Tesla. And this is because the magnetic flux density of a bar magnet is very small. We define the magnetic flux density as the density of the field lines in a given region. For example, in these two cases here, we have B1 and B2. And the more lines that there are through a certain region, the greater the magnetic flux density. And because B2 has more lines through this area in the black square, this means that the magnetic flux density B2 is greater than the magnetic flux density B1. Hey guys, I hope you enjoyed the video. अच्छा जी Moving on,
to electric motors, and before starting off with electric motors we are going to go through the Fleming's left hand rule as well that you might be knowing before as well, जिसमें जो आपकी थंब है, फिर आपकी फर्स्ट फिंगर है और फिर आपकी मिडिल फिंगर है, राइट। जो थंब है वो आपको क्या बताती है, द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये आपको थंब बताती है। फिर आपकी जो फर्स्ट फिंगर है दैट टेल्स यू द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और जो आपकी मिडिल फिंगर है दैट टेल्स यू द करंट। This is what we call as the Fleming's left hand rule, because these magnetic fields can affect the moving electric charges as well as the magnetic poles, and if you place a wire in a magnetic field and pass a current through it, the wire will experience a force on it and we call it a motor effect. अगर एक वायर जिसमें से करंट गुजर रहा है, a wire जिसमें से करंट गुजर रहा है, and let's say you place it in a magnetic field, let's say we have a north pole and we have a south pole, so what is the magnetic field going from north to south, right? And in between you have placed what, a wire. This wire will experience a force either upwards or downwards depending on how we use the Fleming's left hand rule, क्योंकि this is the direction of the current, this is the direction of the field, तो जो force है वो inwards or outwards into या out of page पड़ सकती है। That means this is known as a motor effect, that a current carrying conductor inside a magnetic field experiences a force, and we can use the Fleming's left hand rule to find any of those directions as well. For example, this is the thumb shows motion, the first finger shows you the magnetic field direction, and the middle finger shows you the current. This is how you actually use your Fleming's left hand rule. जैसे कि you can see that the direction of the magnetic field is what, north to south। करंट की डायरेक्शन क्या है, ये आपको एरो बना हुआ है। तो अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करोगे तो यू कैन सी दैट योर फर्स्ट फिंगर विल पॉइंट टू द राइट, फिर साथ ही साथ आपकी जो करंट है, जो मिडिल फिंगर आपकी इनसाइड द स्क्रीन जाए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बनाए जल्दी से। मिडिल फिंगर इज गोइंग इनसाइड योर लैपटॉप स्क्रीन, फर्स्ट फिंगर इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो थंब आपका ऑटोमेटिकली किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड्स। दिस इज नोन एज मोटर इफेक्ट, दैट हाउ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर क्या चीज, इट्स बेसिकली अ वायर इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स एंड वी कॉल इट दी मोटर इफेक्ट। और यही मोटर इफेक्ट की आपकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं, एवरी टाइनीस्ट टू लार्जेस्ट मोटर या ट्रांसफार्मर भी, डीसी मोटर भी, इलेक्ट्रिक मोटर, सब इसी के ऊपर काम करती हैं, ऑन द मोटर इफेक्ट के बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर। देयर इज द टाइनीस्ट मोटर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एज वेल, जिसकी बहुत सारी डिफरेंट अमंग साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली कैलिफोर्निया ने भी एक बहुत माइक्रो मोटर बनाई थी। फिर नैनो मोटर भी डेवलप्स हुई हैं, देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स एज वेल, दे ऑल आर बेस्ड ऑन द सेम मोटर इफेक्ट एज वेल। सो व्हाट इज द मोटर इफेक्ट, अगर आपको कोई पूछेगा, motor effect, a wire carrying conductor held within a magnetic field will always experience a force, and Fleming's left hand rule is the rule for determining the direction of the force generated by the motor effect. Only Fleming's left hand rule can tell you that where is the force acting और वो किस direction में होगी and everything. That is what we call the Fleming left hand rule. Let me show you an animation as well. आपने शायद थोड़ा सा उसको GCSE में भी देखा होगा, that how do we use the Fleming's left hand rule, into page, out of page, upwards, downwards. That will explain you everything as well. Just a second. Together. All right. Let me open up this video. Listen very carefully, okay? Both ध्यान से सुने. Sometimes physics and nature go hand in hand. In this video, we're going to look at using Fleming's left-hand rule to help us remember how current, magnetic fields and direction all go together. First, let's talk about the motor effect. A wire carrying a current creates a magnetic field. This can interact with other magnetic fields, causing a force that pushes the wire at right angles. This is called the motor effect. So magnetic field from north to south, the current going this way, and the force at right angles. We can use our left hand to help us remember what direction the wire is going to be pushed in. It's called Fleming's left-hand rule. With your left hand, spread out your thumb, first finger and second finger, so they are all at 90 degrees to one another. Your first finger represents the direction of the magnetic field, from north to south, so your finger is pointing to the South Pole.
Your second finger represents the direction of the electric current flowing from positive to negative, so your finger is pointing to the negative. Your thumb represents the direction of movement. Try to remember it this way: thumb, movement. Your first finger, magnetic field. Second finger, current. Let's try using Fleming's left-hand rule to answer a question. Pause the video and see if you can answer them. For A, hold up your left hand in the current position. Magnetic field is going from north to south. The current is going in this direction, so the force is going up. For B, the current has changed direction, so you need to rotate your hand around. So that's how physics and nature go hand in hand. We literally use our left hand.